if we put here 2, so this will be x में 2 put करो, so this will be 2 by 3, that means 2 minus 3, that means 2 by minus 1, this will be minus of 1. Yes. So similarly, if we put here, suppose x is equal to 4, then also we can find the value of this function. Yes. But you think about x is equal to, guys, 3. What will be the value of this function at x is equal to 3, guys? Yes. So you see here, f of 3, this will be 2 by 3 minus of 3, just x में 3 put करो, so this will be 2 by 0 and which is undefined. Yes, कोई एक वैल्यू नहीं होगा ना. तो देखो at x is equal to 3 this function does not exist. ठीक है, that means x is equal to 3 में ये फंक्शन का क्या नहीं होगा गाइस, वैल्यू नहीं रहेगा. सो इस टाइप का सिचुएशन के लिए हम लोगों ने लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया था. ठीक है, देखो इसमें और एक प्रॉब्लम है. देखो 3 लेने से दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, बट if we put any value other than 3 we can easily find the value of this function. Yes, कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी फॉर एनी रियल वैल्यू के लिए इसका क्या होगा गाइस, इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा. यस, तो देखो इसमें हम लिख रहे हैं अगेन, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, 2 बाई x माइनस 3. सो दिस इज आवर सपोज नंबर लाइन. सपोज इसमें 3 है, इसमें 4 होगा, इसमें 2 होगा, ये सब सबको मालूम है ना, ये सब हम क्लास में बताया था. देखो ये just wait for 2 or 3 minutes. Yes, I will repeat all those things and then I will come to the main point here. Yes, you see here, so 3 में ये फंक्शन क्या नहीं होता है गाइस, एग्जिस्ट नहीं होता है. बट 3 का आसपास कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज कितना 2.99 which is just less than 3 का नेक्स्ट मतलब छोटा 3 से जस्ट छोटा है, तो उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा गाइस, एग्जिस्ट होगा. यू पुट हियर 2.99, this will be 2 by 2.99 minus 3, so this will be a value. कोई भी एक वैल्यू होगा ये ना, इसको वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन. नीचे 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 3. ये 0 होने के लिए नीचे 3 होना से, तो दिस इज नॉट 0. नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज ए डिफाइंड वैल्यू. यस, कोई भी एक वैल्यू होगा. Just wait guys. Okay, and similarly if we put here x is equal to any value which is greater than 3, suppose 3.0001. yes, if we put here x is equal to here, how, which value will put here, 001. so what will be the value here, you see 2 by 0.0001 minus of 3. so this is also is a value है ना, कोई भी एक रियल वैल्यू होगा. that means you see here, if we consider any value of x which is just greater than 3, also this function, that means if we put any value of x which is just greater than 3, then we can easily find the value of this function. As well as if we put or if we choose any value of x which is just less than 3, we can also find the value of this function. Yes, but at x is equal to 3 we can't find the value of this function. As if we put here x is equal to 3, then denominator में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, and which is not defined. Yes, तो देखो इसमें कुछ क्या होता है, 0 से कोई भी छोटा ले लो उसके लिए वैल्यू आता है, 0 से कोई भी बड़ा ले लो उसके लिए आता है. तो इस 0 से सॉरी नॉट 0 हियर 3, अभी देखो ये 3 से कोई भी बड़ा, तो कितना बड़ा है, 3.000000 ले लो, तो वो भी क्या होगा, 3 से जस्ट ग्रेटर होगा. और कुछ लगा दो इसमें 0 0 0, जो बहुत सारा 0 लगा दो, तो और क्या होगा, 3 से और नियरेस्ट में होगा, जस्ट 3 से नियरेस्ट ई होगा, जस्ट 3 को ये करेगा ना, एक्सिट करेगा. सो how many values we will get here, there are many values here.
दैट मीन्स देखो हम लोग जब x का वैल्यू यहाँ से कम करके देखो, जैसे हम लोग 4 5 जीरो लगाए, उसके बाद और जीरो इंक्रीज किया और जीरो इंक्रीज करो, दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ मतलब 3 का तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग कितना कितना अप्रोच कर पाएगा, देखो कितना तक आ पाएगा, एकदम 3 का जस्ट नियरेस्ट पॉइंट में, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं गाइस, इसमें देखो x किसका तरफ जा रहा है गाइस, 3 का तरफ जा रहा है। यस, x किस तरफ जा रहा है, 3 का तरफ जा रहा है, लेकिन कौन सा साइड से जा रहा है, x से ग्रेटर देन, मतलब x से कोई भी ग्रेटर वैल्यू लिया है, x का राइट साइड से, तो अब हम लोग इसमें इस टाइप करके डिनोट करते हैं, x टेंड्स टू 3 प्लस, दैट मीन्स वी अप्रोच द वैल्यू ऑफ x to 3 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द 3, yes, and similarly if we consider here the left side of this 3, then we write like this way, x tends to 3 minus, yes, this will mean here we approach the value of x to 3 but from the left side. So देखो ये x tends to 3 minus means x का वैल्यू हम लोग 3 तरफ अप्रोच कर रहे हैं but from left side, and 3 plus मतलब we approach the value of x to 3 from right side. But you see here, for any values of left side of 3, this function will exist. Yes, and a similar way, any values of x which is just greater than 3, this function will be exist. ठीक है, अभी देखो कितना नियरेस्ट में हम लोग x लेगा, उसको तो हम लोग इस ये जो x टेंस टू 3 माइनस और 3 प्लस से हम लोग क्या करेगा, डिनोट करेगा। यस, तो अभी देखो यही चीज को जो 3 का जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट नियरेस्ट एंड लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और उसको हम लोग और क्या होगा, देखो जब हम लोग x टेंस टू 3 माइनस देगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस वी डिनोट लाइक दिस वे, यस, limit x tends to 3 minus of f of x. Yes, this means that this will give the value of this function f of x when we approach the value of x to 3 from the left side. Yes, and this is called here left hand limit, or limiting value of this function f of x from the left side. Yes, and similarly if we approach the value of x from right side, then we write like this way. Yes, you see here, limit x tends to 3 plus of f of x, that means this is the value of f of x at when we approach the value of x from right side, yes, to the x is equal to 3. yes, ये 3 पॉइंट में हम लोग 3 पॉइंट का तरफ जब x को हम लोग राइट साइड अप्रोच करेगा, देन जो फंक्शन का वैल्यू होगा और जो अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन होगा उसको हम लोग ऐसा करके लिखते हैं। यस, एंड दिस इज हियर वी कॉल दिस इज राइट हैंड लिमिट। यस, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट हियर एट x इज इक्वल टू 3। कोई भी एक पॉइंट इसमें क्या लिया था, 3 लिया था, तो 3 में ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है गाइस, जब x का वैल्यू हम लोग a का तरफ और 3 का तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द राइट साइड, देन द फंक्शनल वैल्यू आल्सो विल बी अप्रोच। यस, फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, मतलब वो जो ओरिजिनल जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 3 का तरफ जाएगा, तो वही वैल्यू का हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करेगा। एंड जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, देन वी राइट लाइक दिस वे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। ठीक है गाइस, तो देखो इसमें फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेगा। देखो सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस ऑफ a। जब f of x is equal to 1/x minus a है, this will, if see here for this case, at x is equal to a, at x is equal to a, we can find the value of this function. So if we put here x is equal to a, then what we get here, a minus of a, that means we'll get here 1/0, and this is not defined. Yes, that means similar case will happen here. But you see here, if we put any value of x which is just greater than a and just less than a, we can find the value of this function. So in this case,
हम लोग ऐसे करके लिखेगा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a प्लस और a माइनस करके, ठीक है। सो दिस विल बी a माइनस के लिए और दिस विल बी a प्लस के लिए, बस। सो यू सी हियर, so these are the limiting value of this function when we approach the value of x from left side to a, and this is the limiting value of this function f when we approach the value of x from the right side, ठीक है। So these are nothing, simply here left hand limit and right hand limit, and already we have discussed here in your class, okay। So just here I put here some definition for left limit and right limit here, you see here, yes, this is the basic definition, एक रफ definition हम दिया है, देखो क्या दिया है, देखो, the point to the left of a point define the left hand limit of the function at the point, the limit this on limit x tends to a minus f of x is expected value of the function f at x is equal to a, given the values of function f near to x left to s। बस इसको जस्ट डिस्क्राइब किया है, यही कॉन्सेप्ट को हम उसमें थोड़ा लिख के दिया है गाइस, सेम ही है। सिमिलरली हियर यू सी दिस इज द राइट हैंड लिमिट एंड दिस विल give the approaching value of this function f of x when we approach the value of x from the right side of a, yes, when we consider or when we approach the value of x from the right side from a, then the value or the approaching value of this function will be this one, and this is called the right hand limit here, yes। So this is our right hand limit and previous one our left hand limit, yes। Now you see this condition we need here, limit exists, so you have to remember this formula guys, when we call limit exists at a point। So here you see, suppose we consider any function f of x and at x is equal to a, yes, we consider a function f of x and we consider a point x is equal to a। Now we call here this limit, yes, limit exists at x is equal to a if this condition is satisfied, if this left hand limit and the right hand limit, if both the values are same, then we call the limit exists at x is equal to a। So you have to remember this formula also, yes। For example, suppose we consider here a function, yes, suppose we consider a function like this, f of x equal to, suppose twice of x if x is greater than 1, yes, and minus of x if x is less than 1, yes, we consider is a function। Now we need to show, is this limit exist, limit exists at x is equal to 1 or not, yes, is limit exists at x is equal to 1 for this function guys? Then what we do here, just you find the value of this left hand limit and right hand limit for this function, yes, and you check whether this limit exists or not, yes guys, okay। अगेन देखो इसमें और एक कॉन्सेप्ट हम बताया था गाइस, किस टाइप का कॉन्सेप्ट है वो, जो देखो एक सिचुएशन था जो हम लोग ये लिमिटिंग जो होता है ना, ये जो लिमिट लेता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस और a प्लस, ये सब जितना हम लोग बात करते हैं, तो ये सब में क्या आता है गाइस, ये सब तभी हम यूज करते हैं जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ अनडिफाइंड, जैसे सम में कुछ होगा, इसमें सम चीज रहेगा कुछ और डिनोमिनेटर में 0 होगा आइदर, और 0/0 फॉर्म में जब हम x का वैल्यू पुट करेगा तो 0/0 फॉर्म और सम a/0 फॉर्म, बस इस टाइप का कुछ वैल्यू आने से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, सीधा इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने से तो हम सीधा x का वैल्यू पुट कर देता है, ठीक है। सो नाउ जस्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, बट you see just we need to verify this thing whether this limit is exists for this function or not, yes, this is also an important question, yes। You see how we can
Verify here. Just you find the value of left limit and right limit. Yes, you find the value of left limit and right limit here, and also you see the function here. What will be the value of this function f of x? Suppose we consider here this is our point x is equal to 1. Now you see, according to our definition of x here, you see when x is greater than 0, then f of x will be twice of x. That means you see here, this is our x is equal to 1. So if we go here from right side to right side, anyone which value is here greater than 1, तो f of x कितना होगा guys? Twice x होगा. देखो ये 1 है, 1 का राइट साइड में कोई भी वैल्यू ले लो x, उसके लिए फंक्शन क्या होगा? Twice x होगा. And here also you see, for x is less than 1, that means ये लेफ्ट साइड में, yes, ये लेफ्ट साइड में the function will be here हमेशा कितना है? Minus of x. You see here, राइट साइड में हमेशा फंक्शन क्या होगा? Twice x from the right side of 1, and left side में कितना होगा? हमेशा कितना होगा? Minus x. So this is given, yes, this is given. So it's just you find the value of left limit. That means limit x tends to 0 minus of f of x. What will be the value here? You see, limit x tends to 0, 1 minus. 0, 1 minus मतलब the value of x is here. क्या है? Value of x is here less than 1. Yes, 1 minus मतलब just we approach the value of x tends to 1 from the left side. That means यही में कोई भी एक जगह में x होगा. That means the value of x is less than 1 here. Yes, so if x is less than 1, then what will be the value of f of x here? That will be minus of x. So you put the value of x here, put the value of minus f of x here, this will be minus of x. Now you see, if we put here x is equal to 1 here, if we put this limit, is this one undefined form, or we can put the value? You see, you will get a definite value if we put the value of x is equal to 1 here. So since it will give a definite value, so you put the value. So x में क्या करो? 1 put करो. So x में 1 put करने से कितना होगा? -1. So this is the value of left hand limit, or limit x tends to 1 minus. Similarly, you find the value of this one, limit x tends to 1 plus of f of x. So what will be the value of this one? You see, what will be the value of f of x in this case? Guys, you see what will be the value of f of x? Here you see, we approach the value of x to 1 from right side. 1 plus means right side. So we approach from this one. So definitely the value of x will be here positive. Some value, so x will be greater than 1 here. Yes, कोई भी एक value रहेगा which is greater than 1, क्योंकि यहाँ में कोई भी जगह में ले लो which is greater than 1 here. So in this case the value of this function will be twice x here. This is given. Yes. So you put here twice of x. So again you see, if we put the value of x is equal to 1 here, it will give us a definite value. So we can put here, so we put the value of x, what will get here? 2 into 1, that means 2. Now you say guys, are they equal? ये दोनों value equal है क्या? नहीं है. Since this left limit and right limit are not equal, then we call here this limit is not exist at x is equal to 1. Yes, इसमें क्या होगा? At x is equal to 1 में function will not exist for this function. Yes, sometimes for some functions these two will give same value or equal value. Yes, जब equal मिलेगा then we call here yes the limit is exist here. Otherwise we call here yes no, this limit is not exist. Okay. So we can easily find the value or we can easily verify the given functions will limit exist or not. Yes, some point will be there, just you need to verify whether the limit is exist or not, and hope all of you can verify. Yes. So in this case another thing I will discuss here, you see, limit
x tends to a minus, this is our left hand limit, and here we denote like this way, limit left hand limit at x is equal to a. So we write like this way, yes, this is we write like this way. And right hand limit, yes, right hand limit at x is equal to a, we write like this way, this one, limit x tends to a plus f of x, yes, f of x x. So this is our left hand limit, this is our right hand limit. And if limit exists, yes, if limit exists, then what happened, guys? Then this will be equal, limit x tends to a minus f of x, and will be limit a plus of f of x. This will be equal, and since these two are equal, in this case we write like this way, simply we write like this way. Yes, you have to remember this thing, f of a f of x dx, limit x tends to a f of x dx. You see here, इसमें पॉजिटिव प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है. This means here, if we write like this way, then you have to recall this one is nothing. This is for this function here, left limit and right limit are equal. Yes. So you see, when these exist, or when these two values are equal, then we write this way. Yes. So suppose if I write like this way, limit x tends to 2 of f of x, इसने क्या मीन करेगा? The limit x tends to 2 minus and limit x tends to 2 plus are equal for this one. Yes. Yes guys, तो समटाइम इसमें कभी कभी क्वेश्चन में और बुक में ऐसे भी देखने में मिलेगा. तो ऐसा देखने में तुम लोग क्या सोचना है, यस, इसके लिए क्या है, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है. डू यू हैव एनी डाउट गाइस? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Why it is equal? इक्वल नहीं होने से नहीं होगा. देखो हम उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था, देखो क्लास में, याद करो. जो लेफ्ट साइड में क्या एप्पल्स के लिए तुम लोग गया था दुकान में, दोनों साइड का एप्पल्स अच्छा होने चाहिए, देन ओनली वी कैन डिसाइड द एप्पल्स आर. दोनों साइड अच्छा होने से एप्पल क्या होता है, अच्छा होता है. एक साइड में अच्छा है, एक साइड में खराब होने से तो हम लोग कैसे मतलब डिसाइड करेगा जो एप्पल अच्छा है बोल के और एप्पल खराब है बोल के? वी कैन डिसाइड. सो कोई भी चीज़ को अच्छा है और खराब है उसको डिसाइड करने के लिए, और उसका पोजीशन क्या है उसको डिसाइड. यस राहुल, now is it clear? Okay, so just you remember this thing, जो when this left limit and right limit will equal, then we call limit is exist. ठीक है. उसके लिए देखो एक हम थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हम ग्राफिकली कुछ करेगा. देखो कुछ एक फंक्शन लेगा, एक छोटा वाला फंक्शन लेगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करेगा. सपोज वी कंसीडर y इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज हेयर सपोज x माइनस ऑफ 1. एक फंक्शन ले लिया. यस, एक क्या लिया है, फंक्शन ले लिया. रुको, सपोज ट्वाइस ऑफ ले लो, then it will be easier. Yes, twice x later. And suppose we want to verify at x is equal to 1 whether this limit exists at this function or not. Yes, देखो इसको हम ग्राफ में कुछ ड्रॉ करेगा. देखो suppose this is our x axis and suppose this is our y axis. थोड़ा ध्यान से देखो. हाँ, इसको 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3. yes,
So suppose if we put the value of x is equal to 0.99, then what will be the value of f of x here? What will be the value of f of x here, guys? 0.99. So this will be 2 into 0.99. So ये क्या होगा guys? 2 तो नहीं होगा, कितना होगा बोलो? What will be the value of this one? 2 नहीं होगा, समथिंग 1.99 इस टाइप का होगा ना. देखो सिमिलरली हम लोग इसमें 0.9999 और बहुत सारा 9 ले लो. सो ये क्या होगा? 2 नहीं होगा, लेकिन एकदम 2 का नियरेस्ट में होगा ना. 1.9999 एकदम नियरेस्ट में होगा. ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा. तो तुम लोग x का वैल्यू 1 तरफ जितना अप्रोच करोगी उस हिसाब से f ऑफ x का वैल्यू भी क्या होगा? अप्रोच होगा. तो देखो 2 नहीं है, लेकिन 2 का जैसे मान लो 1 का जस्ट नेक्स्ट में लिया है, तो f ऑफ x कितना होगा? ये हम लोगों का 2 लाइन था. सपोज मान लो ये क्या है? 2 लाइन है. ये सपोज हम लोगों का 2 लाइन है, 2 वैल्यू है. तो f ऑफ x ऊपर में होगा, 2 का बराबर नहीं होगा, लेकिन एकदम 2 का नियरेस्ट में होगा. अभी देखो इसको और थोड़ा नियरेस्ट में लेके जाओ 1 का, तो और थोड़ा नियरेस्ट में जाएगा. अभी राइट साइड से जाओ, ये थोड़ा क्या होगा? 2 से स्लाइटली बड़ा होगा, लेकिन एकदम नियरेस्ट में आएगा. तो इस टाइप करके अप्रोच करेगा. देखो तो फंक्शन क्या होगा? देखो 1 से स्लाइटली ग्रेटर जाने से उसका वैल्यू जस्ट 2 से स्लाइटली एक्सीड करेगा. अभी स्लाइटली नीचे जाकर लेफ्ट साइड में ले लो तो क्या होगा? जस्ट स्लाइटली 2 से स्लाइटली छोटा होगा. ठीक है, इस टाइप करके. तो देखो जब हम लोग x का वैल्यू इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, 1 का तरफ अप्रोच करेगा, देन फंक्शन ऑफ द और इस फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? ये 2 का तरफ अप्रोच करेगा. सिमिलरली हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड से भी अप्रोच करो तो क्या होगा? जब x का वैल्यू 1 का तरफ अप्रोच करेगा, देन द फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फिर भी क्या होगा? 2 का तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, पूरा अप्रोच करते हैं. यही होगा. लेफ्ट साइड से जो हम लोग जब लेगा तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा, राइट साइड से लेने से वो क्या होगा? राइट हैंड लिमिट होगा. बस इतना ही. ठीक है, तो इतना हम ऑलरेडी क्लास में तुम लोगों को दिया है. ठीक है, जस्ट तुम लोग अभी एक बात याद रखो, जो कोई भी फंक्शन कोई भी पॉइंट में फंक्शन एग्जिस्ट हम लोग लिमिट हम कब एग्जिस्ट बोलते हैं? जब वो दोनों का लेफ्ट राइट दोनों वैल्यू सेम होता है. ठीक है, और देखो क्यू दोनों इक्वल होना चाहिए. देखो क्लास में हम एक एप्पल्स का और ऑरेंज का भी हम कुछ एग्जांपल्स लिया था. ठीक है, उसको थोड़ा याद करो. हो गया, उसको थोड़ा याद करो बस. दैट विल बी एनफ. नाउ यू सी हियर, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो ये चीज यू सी हियर, लेट f and g be two functions such that this is limit x tends to a f of x and limit x tends to a gx exist. देखो इसमें हम बोला है limit x tends to a f of x and limit x tends to g of f gx is exist here. That means देखो इसका जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल है, इसके लिए भी g के लिए भी लेफ्ट राइट दोनों लिमिट इक्वल था, तो इसलिए हम एग्जिस्ट बोल दिया. ठीक है, सपोज दिस लिमिट्स आर एग्जिस्ट, देन क्या होता है? देन लिमिट x टेंस टू a f of x plus gx, सम ऑफ दिस टू फंक्शंस, सम ऑफ दिस टू फंक्शंस को हम लोग लिमिट लेने से ये लिमिट क्या हो जाता है गाइस? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x हो जाता है प्लस लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx वी कैन राइट. यस, सो दिस इज ए फॉर्मूला, इसको याद करना है. देखो जो कोई भी फंक्शन, टू फंक्शंस f एंड g दोनों के लिए जब कोई भी एक पॉइंट x इज इक्वल टू a में फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट होता है, देन क्या होता है? लिमिट x tends to a, sum of these two functions is equal to limit x tends to a of f of x
प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी एक्स, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यू सी हियर, suppose we consider f of x is equal to suppose twice x and g of x is equal to suppose 1 by 3x, yes, and suppose we consider at x equal to 1, at x is equal to 1 में देखो ये दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट होगा, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस टू फंक्शंस, यस, यू सी। इसके लिए जब हम लोग लिमिट x टेंस टू 2 पुट करेगा, 1 पुट करेगा, देखो f ऑफ x में कितना होगा इसका वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू ट्वाइस x है, एंड हियर वी कैन पुट x इज इक्वल टू 2 1 हियर। देखो इसका भी हम एग्जांपल एक लिया था, जैसे एक अननोन प्लेस में कोई गया था, याद है ना, कोई भी आदमी अननोन प्लेस में जाने से जो वो जो लकड़ी वगैरह लिया था, ठीक है, तो देखो इसमें कुछ x का वैल्यू 1 डालने से कोई अनडिफाइंड और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, दैट मीन्स वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, एंड इफ वी पुट हियर x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन लिमिट, दिस विल बी 2 into 1, दैट मीन्स कितना होगा गाइस, 2 होगा, यस। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 2। Similarly, that means this is limit is exist, yes, limit x tends to 1 is exist here, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया है गाइस, 2 आए है, एक डेफिनेट वैल्यू आ गया, दैट मीन्स वी कैन फाइंड दिस वैल्यू लिमिट। सिमिलरली इसका वैल्यू निकाल के देखो, लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ जी एक्स, what will be the value guys, limit x tends to 1 of 1 by 3x, so what will be here, you can also put here the value of x, so this will be 1 by 3, that means limit x tends to 1 of gx also you can find। देखो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट होता है, that means ये दोनों एग्जिस्ट होता है। now you check whether this is equal to this one or not, just you verify whether these two values are equal or not, so you ये दोनों को सेपरेटली इसको निकाल के देखो क्या होगा। now if we find this value f of x plus gx, then what will be f of x plus gx, और इसमें लिमिट भी लगाओ, लिमिट x टेंस टू 1 कितना होगा बोलो, लिमिट x टेंस टू 1, f of x मीन्स कितना था, ट्वाइस x, gx मीन्स 1 by 3x, so if we put here x is equal to 1, we can put here, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड नहीं होगा, दिस विल बी 3 by 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1 by 3 एंड दिस विल बी 7 by 3, इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम ले लो, दिस विल बी 7 by 3, सो देखो इसका वैल्यू 7 by 3 आए है, बट if we find the if we take the sum of these two one, limit x tends to 1 of f of x plus limit x tends to 1 of gx, what will be this value here, this is 2 and this is 1 by 3, that means this is also 7 by 3, you see here these two values are equal, that means these two are क्या है, equal, yes guys, yes these two are equal, so what we see here, जो कोई भी फंक्शन, कोई भी टू फंक्शंस f एंड g, इसका लिमिट x एट x इज इक्वल टू a में एग्जिस्ट होने से, देन ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ द फंक्शंस का जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू द देयर सम ऑफ द लिमिटिंग वैल्यूज, यस, सो दिस इज ए फॉर्मूला, इसको याद रखो, ठीक है, this is an important formula, and in case of subtraction this is also happened, you see, in case of subtraction or difference, ये देखो f of x minus gx, इसमें लिमिट f of x एंड लिमिट x टेंस टू a of gx होता है, ठीक है, सो हम लोग सब्ट्रैक्ट होने से भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, लिमिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो दिस इज हैपेंड, yes, in case of multiplication here you see, in case of multiplication this is also happened, that means इस टाइप करके देखो, लिमिट x टेंस टू a of f of x gx, ये क्या हो जाता है गाइस, ये किस टाइप का करके हम लोग ये कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f of x इंटू लिमिट
x टेंस टू a ऑफ gx होता है। यस, देखो लिमिट f का साथ भी जाता है, g का साथ भी जाता है। गाइस, इज द स्क्रीन इज विजिबल? Is the screen is visible? Abhishek, only few students have joined. Few students have only joined, guys. Yes. Now is it visible? I think now visible. Yes, okay. So देखो, only few students have joined, so I asked you to send a message the group. Yes, because I will solve here some important questions. Yes, there are many questions are there in our, you see there are many questions, बहुत सारा questions होगा, उसको solve करना है guys. ठीक है, तो जस्ट ग्रुप में सेंड करो एक मैसेज। यस, ग्रुप में सेंड करो, सबको ज्वाइन करने के लिए बोलो। हाँ, तो देखो, इन केस ऑफ कोशेंट और रेशनल फंक्शन दिस इज ऑल्सो हैपेंड। देखो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई जी एक्स क्या होता है, लिमिट f ऑफ x का साथ भी जाता है, gx का साथ भी जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल सपोज लिमिट x टेंस टू 0, यस, साइन ऑफ x बाई कॉस x। तो देखो, एक ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, तो हम लोग कैसे लिखेगा इसको? देखो, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ साइन x लिखेगा, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ cos x लिखेगा। ठीक है, देखो लिमिट हम लोग देखो, ये साइन का साथ भी लगा दिया, cos का साथ भी लगा दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। नाउ कैन यू से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट गाइस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट? कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ x here 0 directly? Can you put the value of x here? You see here, if we put here x equal to 0, then what we get here? If we put the limit, this will be sine of 0 and here this will be cos of 0. Do you know the value of sine 0? What is the value of sine 0 guys? What is the value of sine 0? That is 0. What is the value of cos 0? Cos 0 कितना है guys? बोलो, cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। सो देखो, 0 बाई 1 मतलब क्या होगा गाइस? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो दिस इज ए डेफिनेट वैल्यू ना, एक वैल्यू आ गया। तो देखो, ये जो फंक्शन हम लोगों को दिया था ना, जिसका लिमिट देखो, एक ऊपर में एक साइन एक्स था, नीचे कॉस एक्स था, तो अब हम लोग लिमिट ऊपर में और दोनों मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साथ लिमिट ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन से हम ले लेगा। ठीक है, जस्ट दिस इज एन एग्जांपल हियर वी कंसीडर एंड यू सी you have to remember this formula. This is an important formula. Yes, इसको याद रखो। क्या है देखो फॉर्मूला को, we can prove this formula also, but just you remember this one. Limit x tends to a, x to the power n minus of a to the power n by x minus of a, and this is equal to n of a to the power n minus 1. Yes, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करो guys. We need this formula. Suppose you see, if we want to find the value of this limit x tends to 2
of x square minus of 2 square by x minus of 2. Yes, suppose we want to find this limit. Yes, then what we do here, just to compare these functions to this our formula. You see, in place of a, here कितना दिया है देखो, इसमें a में कितना दिया है देखो, कितना दिया है, 2 दिया है ना, देखो 2 दिया है. सो हियर a कितना है, 2. हियर n कितना है, देखो n को भी 2 दिया है. देखो इन प्लेस ऑफ a कितना दिया है, 2. सो हियर a is 2, n is 2. So just you use this formula. What will be the value here, guys? Limit x tends to 2, this one. इसका वैल्यू कितना होगा, सीधा ये फॉर्मूला यूज करो. सो हियर व्हाट इज n, n is 2, ये फॉर्मूला. यस, n a to the power n minus 1. So n is 2, a is 2, 2 to the power n minus 1, that means 2 minus 1. So what will be the value, guys? 2 into 2 to the power 1. So 2 to the power मतलब 2 ही है. So 2 into 2 मतलब कितना होगा, 4 होगा. ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन को हम क्लास में भी किया था, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करके. ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करके हम इसको सॉल्व किया था, उसका वैल्यू भी 4 आया था. तो उसको थोड़ा याद करो और उसको हम वो प्रोसीड्यूर भी हम सिखा देगा. ठीक है, जस्ट अभी के लिए याद करो, यही क्लास में हम उसको भी करा देगा. ठीक है ना. इसमें एक बात याद रखो, देखो इसमें क्या दिया है, लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और अलजेब्रा ऑफ लिमिट. देखो कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होने से देन उसका लिमिटिंग वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड बाय यूजिंग और बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिट. यस, फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, सपोज वी कंसीडर हियर दिस वन 2x power 5 plus 7x cube plus 9. So this is a polynomial function. You see, this is a polynomial function. And suppose we need to find the value of this one, x tends to 0, limit x tends to 0 of this one. Then what we do, you see here, this is just a polynomial function. Just what we do here, just you put the value of x here, directly we can put. Yes, so if we put here x is equal to 0 here, then what we get, 0 to the power 5, 7 into 0 cube plus 9. So ये देखो, this will be 0, this will be 0, that means we'll get here 9 only. So in case of any polynomial function, हम लोग क्या करेगा, लिमिट को निकालने के लिए सिंपली जस्ट x का जो वैल्यू होगा उसको सीधा डाल देगा. ठीक है गाइस, ओके, इसको भी याद रखो, जो कोई भी पोलिनोमियल होने से हम लोग ऐसे कर सकते हैं. सो नाउ यू सी हियर देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड और टू सॉल्व द लिमिट. हियर यू सी देयर आर 2-3 methods here we'll discuss. One is here direct substitution method. अभी जो हम किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया है, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड we can use only when क्या होता है, द फंक्शन इज पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल नहीं होने से भी जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तब अनडिफाइंड कुछ सिचुएशन नहीं आना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if we want to find this limit x tends to suppose to x square plus 5 by x plus 2. Now you see, if we put the value of x is equal to 2 here, this will give is some definite value. Yes, if we put here x is equal to 2, what we will get here, you see, we put here x is equal to 2 here, so this will be 2 square plus 5, और नीचे कितना होगा 2 plus 2. So here you see 2 square means 4, इसमें 5 है, divided by 2 plus 2 मतलब 4. So this will be 9 by 4. Here you see, we can put here x is equal to 2, because if we put here x is equal to 2, you will get some definite value. Yes, so that's why we can put here direct, we can substitute this value. Yes, but you see, if we consider, yes guys, sorry, I'm extremely sorry, some
Suppose if we want to find this limit, yes guys, suppose limit this one guys, a limit x tends to of 2 x square plus 5 by x minus 2. Now can you put or can you substitute directly? In this case, can you put the value of x is equal to 2 here? Can you substitute? You say? Saurabh? Is it possible to put the value of x is equal to 2 here? Is it possible? No. Because you see, if we put here x is equal to 2 here, then this value will be 0, yes. If we put here x is equal to 2, then this value will be 0, yes. And denominator में 0 नहीं होता है guys, yes. जब 0 होगा, then it will undefined, yes. That means इसको हम लोग directly क्या है, ये जो direct substitution method है, we can't use this one, yes. Then what we do here? We use this factorization method. This type of problem, for this type of problem we use here factorization method here, yes. For example, suppose this one, suppose if we want to find limit x tends to 2 x square minus of 4 by x minus 2, yes. इसके लिए देखो, what we do here, we can directly put the value of x is equal to 2 here, because नीचे देखो, if we put here x is equal to 2, then denominator में 0 होगा and also numerator also will be 0. That means if we put here x is equal to 2, this will be 0 by 0.5 and which is undefined, yes. Then what we do here, just you factorize some portion here and you cancel some कॉमन टर्म्स. सो व्हाट वी डू हियर, जिसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन, व्हाट वी गेट हियर, देखो इसको फैक्टराइज करने से कितना होगा, दिस विल बी एक्स माइनस ऑफ 2 एक्स प्लस ऑफ 2 एंड नीचे कितना होगा गाइस, एक्स माइनस 2. And you see here x minus 2 are common terms, yes, we can cancel. Why this is there, these two things we can cancel, because they are non-zero, yes. ये जो x minus 2 and x minus 2 ये क्या होता है, non-zero होता है. ये देखो इसका बारे में भी हम डिस्कस किया था, जो क्यों हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, because x minus 2 are non-zero here. Why this is non-zero? Because you see we are approaching the value of x tends to 2 but not equal to 2, yes. This limit is here, this limit we reply here, so the value of x is just tends to 2 not equal to 2, and since here x is not equal to 2, that means these two are non-zero, and since they are non-zero, that means we can cancel, yes. Just you cancel them, then what we get here, limit x tends to 2 of x plus 2. Now you see, if we put the value of x is equal to 2 here, we'll get some definite value, so you put the value of x, so what will be there, 2 plus 2, that means the value of limit will be 4. इसका वैल्यू कितना आएगा गाइस, 4 आएगा. देखो यही क्वेश्चन हम प्रीवियस फॉर्मूला यूज करके किया था, यस. देखो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व किया था इसमें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसका वैल्यू भी कितना आया था, ये हमें 4 आया था, एंड देखो ये नेक्स्ट में भी कितना आए हैं, देखो यहाँ में भी क्या आए हैं, 4 ही आए हैं, ठीक है ना गाइस. बस तो बोलो इसमें किसी का डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? Do you have any doubt guys? No? Okay. So here another procedure are there, you see here, by using some standard limits.
some standard limits are also there, and we can easily solve the limiting problem by using that standard limits also. Yes, some standard formulas are there, we can easily use that. Okay, so these are the guys, these are the some standard formulas. Yes, you see, these are the some standard formulas here. I think it is visible or not? You see, it is visible, guys. Is the board is visible? Yes, these are few yes, देखो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम इसको सेंड कर देगा, ठीक है, तुम लोगों को हमने सेंड कर देगा, और जो जो चीज़ हमको इसमें चाहिए उसको हम इसमें यूज़ करेगा, ठीक है, उसको हम लिखते हैं. देखो, दिस आर नॉट विजिबल, ठीक है, सो यू just you remember all these formulas. This one, limit x tends to 0, sine of x by x, this is 1. You have to remember this formula. This is an important formula. Yes, इसको याद रखो. Limit x tends to 0, tan x by x, this is also 1. Yes, this is another formula. Limit x tends to 0, 1 minus of cos x by x. Yes, limit x tends to, देखो ये सब भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखो ये इसमें दिया हुआ है. देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू कितना है 0. लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई एक्स कितना है 1 है. यस, इसको याद रखो. लिमिट x टेंस टू 0, tan x बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना है गाइस 1 है, ठीक है. ये सब को थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखो, ठीक है. और देखो इसमें और एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना है, जैसे ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1. यस, नाउ यही में x को रिप्लेस करके सपोज y दे दो, लिमिट y टेंस टू 0 y बाई y, दिस इज ऑल्सो विल बी 1, ठीक है. दैट मीन्स देखो ये दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल x y z, कोई भी सिंबल के लिए, कोई भी ले लो, कोई भी एंगल ले लो, कोई भी ले लो. जैसे मान लो इसमें y लिया है, इसमें भी y लेना है, इसमें भी y लेना है, ठीक है. तो देखो इसमें एक बात और एक बात ध्यान रखो, जो इसमें y, इसमें y, इसमें तीनों सेम होना चाहिए. ये तीनों सेम होने से देन ओनली दिस, इसका वैल्यू कितना होगा गाइस 1 होगा, ठीक है. देखो कभी कभी इस टाइप का हो जाता है, हम एक कुछ एग्जाम्पल भी लेगा. जैसे देखो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें क्या दिया है साइन ऑफ x बाई, रुको, साइन ऑफ ट्वाइस x बाई x दिया है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं है गाइस. साइन ऑफ ट्वाइस x बाई x, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 गाइस. व्हाई यू सी हियर, इसमें है ट्वाइस x, इसमें है x, इसमें है x, सो ये 1 नहीं होगा. ये 1 होने के लिए इसमें भी ट्वाइस x होना है, इसमें भी ट्वाइस x होने से, देन ओनली वी कैन पुट हियर दिस वैल्यू इज 1. यस, तो देखो इस टाइप का बहुत कुछ क्वेश्चन होगा, हम उसको कर देगा, थोड़ा सा वेट करो. जैसे देखो लिमिट x टेंस टू 0, सपोज 5x बाई 5x, देखो इसका वैल्यू भी कितना होगा. देखो लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन 5x बाई 5x, इसका वैल्यू भी 1 होगा. व्हाई गाइस, यू सी, इसमें 5x है, इसमें 5x है, इसमें 5x है, तो तीनों सेम है. दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी कितना 1, ठीक है. तो इसका ऊपर डिपेंड करके सपोज हम एक क्वेश्चन लेगा. देखो सपोज लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ ट्वाइस x बाई x, इसका वैल्यू चाहिए. इसका वैल्यू कितना होगा, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू. लिमिट x टेंस टू ट्वाइस x बाई x एंड x टेंस टू 0, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट गाइस. यू सी हियर, इसमें ट्वाइस x है, इसमें सिंपली x है, इसमें भी x है, देन इसका वैल्यू तो 1 नहीं होगा गाइस. द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज नॉट 1 हियर. यस, दिस इज
Clear. Now you see what we can do here for this limit. What we can do. What we can do, guys, here, you see what we do here. You see, you can write like this way: limit x tends to 0 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स. इसमें सिंपली एक्स है तो इसमें भी सेम करो, इसमें ट्वाइस एक्स है ना, तो यहां में भी ट्वाइस एक्स बनाओ. सम कुछ मल्टीपल करके कुछ डिवीजन करके यहां में जो चीज रहेगा वही चीज यहां में डालो. तो देखो इसमें ट्वाइस एक्स है तो इसमें भी हम ट्वाइस एक्स बना दिया, इससे सीधा लिख दिया ट्वाइस सेम बनाने के लिए. अभी देखो 2 से डिवाइड किया तो हम लोग क्या करेगा, 2 से मल्टीपल भी करो सच दैट दे कैन कैंसिल हो. यस, सो देखो ये 2 कैंसिल होके एक्स ही रहेगा. जस्ट यहाँ में ट्वाइस एक्स है बोल के इसको यहाँ में भी हम ट्वाइस एक्स बना दिया. ठीक है, अभी 2. अभी देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कांस्टेंट को हम लोग वी कैन आउटसाइड द लिमिट. यस, इसमें देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ कितना होगा गाइस, ट्वाइस एक्स बाई ट्वाइस एक्स. देखो ये दोनों सेम है. अभी इसमें भी सेम होना चाहिए. x टेंस टू इसमें 0 है बट यहाँ में ट्वाइस एक्स है, यहाँ में भी ट्वाइस एक्स है. नाउ ये भी x टेंस टू 0 को क्या करना है, ट्वाइस एक्स टेंस टू 0 में कन्वर्ट करना है. नाउ इज इट पॉसिबल? देखो अभी एक याद करो, एक चीज याद करो. देखो x टेंस टू क्या है, 0 है. दैट मीन्स x का वैल्यू किस तरफ जा रहा है गाइस, 0 का तरफ जा रहा है. देन बोलो ट्वाइस एक्स का वैल्यू किस तरफ जाएगा गाइस. देखो सपोज x का वैल्यू, x में तुम लोग 0 डालो तो ये क्या हो जाएगा गाइस, बोलो एट x इज इक्वल टू 0 में. गाइस देखो एक मिनट, जब x का वैल्यू 0 डालोगी ना, यहां में x का वैल्यू जब ट्वाइस x में 0 डालोगी तो कितना होगा, बोलो 2 इंटू 0. तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अभी देखो x का वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटा डालो तो इसका वैल्यू भी क्या होगा गाइस, 0 से स्लाइटली छोटा होगा. इफ यू पुट हियर x इज व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, जस्ट 0 से ग्रेटर होगा. दैट मीन्स व्हाट वी कैन सी हियर, when x tends to 0 then twice x also tends to क्या होगा, 0 होगा. क्योंकि x का वैल्यू 0 डालने से twice x का वैल्यू भी क्या हो जाता है गाइस, 0 हो जाता है. दैट मीन्स twice x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा. यस, सो दैट मीन्स इन केस ऑफ x टेंस टू 0 वी कैन पुट लाइक दिस वे, twice x टेंस टू 0. सेम ही बात है. ठीक है, तो नाउ यू सी हियर this portion. What will be the value of this portion guys? What will be the value of this portion? बोलो, what will be the value of this portion? देखो इसमें twice x है, इसमें twice x है, इसमें twice x है. That means this value will be 1. Yes, that means the value of this limit will be 2 into 1. That means 2 होगा. Is it clear guys? बोलो, is it clear? Is it clear? Okay. देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है रहा. देखो ये सब हम इसलिए सबको क्लास में भी बताया था, जो टाइमली सबको ज्वाइन करने के लिए हम बताया था बार बार ना, लेकिन बच्चा लोग का मालूम नहीं कि वैसे करते हैं. ठीक है, सो देखो द लिमिट और द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी हियर 2. यस, अनदर क्वेश्चन आई विल कंसीडर हियर. सपोज we want to find this value, limit x tends to 0 tan of ax by x. Suppose we need the value of this limit. What will be the value of this limit? Yes guys, what will be the value of this limit? Then what we do here guys, क्या करेगा, देखो इसमें क्या है गाइस, ax है बट इसमें क्या है, सिंपली x है और इसमें भी x है.
तो आइदर हम लोग को क्या करना है, ये 10ax से a को हटाना है कुछ फॉर्मूला यूज करके, और यहां में हम लोगों को a लाना है। ठीक है, देखो 10 से आइदर कुछ मैकेनिज्म यूज करके a को हटाना है और यहां से यहां में a लाना है। तो हम लोग क्या करेगा गाइस, देखो 10 का x इक्वल टू 1 जो फॉर्मूला था ना, इसको यूज करने वाला है हम, और इसको लिए तीनों सेम चाहिए तो हम तीनों सेम बनाएगा। जस्ट यू यूज सम टेक्निक हियर, जस्ट यू सी हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 ax by x, दिस इज गिवन। सो देखो सिंस हियर ax है तो इसमें भी ax बनाओ, सीधा ax लिखो। ठीक है, ax लिख दिया, और इसमें सम कंडीशन भी रहेगा, इसमें सम इस टाइप का कंडीशन रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखो ax दे दिया तो नीचे में भी क्या करो, सिंपली ax डालो। अभी देखो ax को हम a को हम एक्स्ट्रा लिखा है तो a को मल्टीपल करो, हो गया। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 10ax by x, देखो नीचे में भी x आया है, इसमें भी x आया है। अब नाउ यू सी दिस a इज ए कांस्टेंट, सो यू कैन टेक आउटसाइड फ्रॉम द लिमिट। देखो कोई भी लिमिट कांस्टेंट होने से देन दैट कांस्टेंट वी कैन टेक आउटसाइड फ्रॉम द लिमिट। यस, आई थिंक स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस, guys, is the screen is visible? Just wait for few seconds, I will check. I think this is visible now. Hope this is visible now. नहीं दिखा रहा है बस। Now is it visible? Yeah, done. Okay, so now you see here this is ax, here also ax। ठीक है, तो अभी देखो इस फॉर्मूला का टाइप हो रहा है ना, दोनों क्या हो रहा है, इसमें जो है इसमें भी सेम है, अभी सिर्फ इसको सेम करना है। ठीक है, यहाँ में जो है इसको सेम करना है। तो हम लोग क्या करेगा अभी गाइस, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ए को इस साइड में लेके आ जाओ। सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 ax by ax है। ठीक है, तो अभी सेम कॉन्सेप्ट यूज करो हियर, व्हेन x टेंड्स टू 0 तो ax टेंड्स टू क्या होगा गाइस, इसको चाहिए। तो देखो इसमें व्हेन x टेंड्स इक्वल टू 0 देन ax इक्वल टू कितना होता है गाइस, बोलो। जब x इक्वल टू 0 होता है, when x is equal to 0 then ax also क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड देखो x का वैल्यू 0 का तरफ टेंस करो तो ax का वैल्यू भी क्या होगा गाइस, 0 का तरफ टेंस करेगा। सो इन प्लेस ऑफ x टेंस टू 0 वी कैन पुट लाइक दिस वे। यस, आर द सेम थिंग, x टेंस टू 0 जो बात है, ax टेंस टू 0 सेम ही बात है। तो हम लोग यू कैन पुट लाइक दिस वे। नाउ यू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। So what will be the value of this limit? Bolo. This will be this a. Yes. Guys, bolo. Do you have any doubt? A होगा. Yes. Yes guys, the value of this limit will be a. So hope all of you can find this type of limit. Yes, so देखो here another type of functions are there. Yes, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेगा, देखो इस टाइप का प्रॉब्लम को, दिस इज आवर प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व दिस लिमिट। इसमें हम जितना एग्जाम्पल्स लिया था, ऑल द एग्जाम्पल्स क्या है गाइस,
ऑल द एग्जाम्पल्स आर क्या है, जस्ट स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग सॉल्व किया था. सो ऑलरेडी वी हैव टेकन सम टू टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. वन इज क्या है जिसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. सेकेंड हम लोग को क्या था, डायरेक्ट सम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. और एक हम सीखा था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सम फैक्टराइजेशन करके हम लोग क्या किया था, उसको सॉल्व किया था. बट इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, लिमिट होता है, जिसको हम लोग क्या करना है, सम रैशनलाइजिंग करना है. ठीक है, रैशनलाइजिंग करके उसका वैल्यू निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, suppose if we want to find this value, yes, limit x tends to of 0 2 plus x minus of root over 2 by x. Suppose if we want to find this limit, yes guys, then what happened basically here, what happened guys, देखो if we put here directly x is equal to 0, then denominator में x है तो ये तो 0 हो जाएगा. That means we can't put the value of x is equal to 0 here. Yes, 0 here. So ये जो x है इसको हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है. Now you see another thing is here, we can easily remove this x. देखो अभी इसमें जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो उसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करके उसको हम लोग फैक्टराइज किया था और उसको फैक्टराइज करके x माइनस 2 को हटा दिया था. बट इसमें हम लोग उस टाइप का हम लोग का है ही नहीं जिसको हम लोग हटा सकते हैं. तो देखो इसमें हम लोग क्या करेगा गाइस, देखो इसमें हम लोग ये जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, इसमें हम लोग कुछ रैशनलाइजिंग करके हम लोग इसमें सॉल्व करेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें नीचे x है, इसमें कितना है 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर 2, ये चीज़ है ना. तो देखो इसमें एक हम लोगों का पास फॉर्मूला होता है गाइस, x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक फॉर्मूला है. देखो a माइनस बी ए प्लस बी जैसे फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है. देखो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर होता है. यस, ऐसा होता है. तो देखो गाइस इसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए, देखो x माइनस ए एक्स प्लस ए है तो देखो इसमें क्या है, ए एक चीज है और एक चीज है, तो दिस वन माइनस दिस वन है तो यही का प्लस एक ले लेगा, 2 प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 2, प्लस वाला ले लिया, नीचे में भी लेगा ऊपर में भी लेगा. यस, ऐसा करके ले लिया, दोनों में हम लोग ले लिया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग ये चीज को ले लिया, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 2 इसमें और इसमें ले लिया, दोनों में ले लिया. ये लेने से क्या होता है गाइस, देखो ये जो है ना x माइनस ए एक्स माइनस बी टाइप का हो जाएगा, दिस टाइप का. सो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. यस, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. सो देखो नीचे जितना इसको रखो, x ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 2 इसको सेम रखो. अभी a माइनस बी ए प्लस बी इस टाइप का होगा, दैट मीन्स दिस विल बी 2 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर 2 ऑफ होल स्क्वायर होगा. आई थिंक दिस इज फिजिबल. सो नाउ यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन. इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बी x, दिस विल बी 2 प्लस एक्स, इसको सेम रखो, हाँ ब्रैकेट में डालो. अभी देखो ये रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल होकर कितना होगा, 2 प्लस एक्स होगा और इसमें कितना आएगा, 2 आएगा. यस, अभी देखो ये 2 कैंसिल होके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा गाइस, देखो इसमें लिमिट x टेंस टू 0, नीचे तो x रूट ओवर ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 2 होगा, ऊपर में देखो 2 कैंसिल हो गया, सिंपली x रहेगा. नाउ यू सी, नाउ वी कैन इजीली कैंसिल दिस x. देखो कैंसिल कर दिया तो अभी कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 बाई
root over 2 plus x plus root over 2. Now if we put here x is equal to 0, तो इसमें कोई undefined form तो नहीं आएगा guys. तो now we can put the value. So root over 2. So that means यहाँ में क्या होगा, root over 2 plus root over 2. That means 1 by 2 of root over 2 will be the result or will be the value of this limit. Do you have any doubt, guys? Do you have any doubt? देखो, सो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है गाइस, इसको नोट करो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो एक होमवर्क हम देता है, होमवर्क एक असाइनमेंट है, तुम लोग सब लोग सॉल्व करो। कुछ लिमिट्स दिया रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यस, साइन ऑफ 5x बाई 5x, इसका वैल्यू कितना होगा चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखो तुम लोग, हाँ इसको लिखो, x टू दी पावर 10 माइनस 5 टू दी पावर 10 बाई x माइनस ऑफ 5, व्हाट विल बी दिस वन। लिमिट x टेंड्स टू, इसको करना है गाइस, हाँ ये सब करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर ऑफ x बाई रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू भी निकालो, ठीक है, इसको नोट करो गाइस। इसको नोट करो, दिस क्वेश्चंस आर होमवर्क गाइस, जल्दी जल्दी नोट करो। x to the power 10 minus x to the power 5 to the power 10 by x minus 5, yes, इसका वैल्यू चाहिए। Yes, and also you need to find the value of this on limit x tends to 1, 5x square plus 7x plus 2 divided by x square plus 1, इसका वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, बस इसको नोट करो। Yes, this is x tends to 5, yes, this is x tends to 5 guys, this is not x tends to 0, yes, this is x tends to 5, yes, yes Shaurav, but also you can find the limit when x tends to 0 also, no problem. If we put here x tends to 0, then also you can find the value of this limit, then also you can find the value of this limit, yes guys, when if we put here limit x tends to 0, then also you can find the value of this limit, yes. So you may write like this way also, x tends to 0, x to the power 5 minus suppose 4 to the power 5 by x minus 4, then also you can find the limit of this, yes, then also you can find. So this is another question, yes, this is also, yes guys, so these are the homeworks. अभी देखो some multiple questions are there and you need to find this limit. You choose which option is correct. Here you see just here I will consider here 4-5 questions are there and these are most important guys, yes. So which option will be correct here, you see here limit tends to x, limit x tends to minus 1, limit x tends to minus of 1, this one, 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4 plus x to the power 5
x to the power 6, x to the power 7, x to the power 8, x to the power 9 and x to the power 10. But this is the question. Now what will be the value of this limit? Guys, can you find the value of this limit? So do yourself here, 1 plus minus 1, just you put the value of x. Because you see here, this is a polynomial, that means we can directly substitute the value of limit. Yes, so you put the value of x here. So what will be the value? So इसको put करके देखो कितना होगा? minus 1 to the power 8, minus 1 to the power 9, minus 1 to the power 10. तो देखो कितना होगा गाइस, इसका वैल्यू तो 1 रहेगा, इसका -1 होगा, इसका 1 होगा, इसका -1 होगा, 1 होगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1. सो व्हाट विल बी द वैल्यू गाइस? कितना होगा बोलो? हाउ मेनी प्लस 1 आर देयर? 1, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 आर देयर. How many minus 1 there? 1 2 3 4 5. So there are minus 1 कितना है? 5 and plus 1 कितना है? 6. So what will be the value guys? The value of this limit will be 1. So which option will be correct? This option will be correct. Yes guys, this option will be correct. Hope you can find और you can solve this type of questions. Yes, देखो ये सब बहुत ही important है. देखो here another questions are there. देखो this is the limit x tends to 0 a log of 1 plus ax. What will be the value of this limit? One thing you remember, log of 1, the value of log 1 is 0. Value of log n is 0. So now we find what is the value of this limit, or which option will be correct here. Yes, which option will be correct? Which option will be correct? You remember this formula, log of 1 is 0. So what will be the correct option here? What will be the correct option? Joy is here. Rahul. What will be the correct option? करो इसको. First option is correct, sir. Any other? Abhishek, Tessering, bolo. There are 14 students joined here. 1. This is 1, Choro. You see? So if we put here x is equal to 0, then what we get here? If we put here x is equal to 0, simply you put here x is equal to 0. So a into 0 will get here. So log of 1 plus 0 means log of 1 hoga. Then what will be the 0 guys? 0 will be there. So 0 is the right answer guys. Why you are putting here 1? How we get the value of this limit is 1? This will be 0. Why you see here? Just you put the value of x here. X is equal to 0. If we put here, then this value will be 0. That means you will get the value of this one will be log of 1. Then what is the value of log 1? Log 1 is 0. Log of 1 is 0 here. Yes, देखो कितना एग्जाम इसमें दे भी दिया था. अरे you find this value. This one. Limit x tends to 1. जल्दी जल्दी करो हाँ. 1 plus log of x minus of x divided by क्या है guys?
1 plus twice x minus of x square. Fine. What will be the value of this? What will be the value? Which option will be correct here? और एक बार my brain is not working. Kidney is working right now. Okay, देखो क्वेश्चन फास्ट और एक बार क्वेश्चन फर्स्ट मतलब this one guys, this one Rahul, this one. Okay, you see here for this limit what we do here, you see this is just a polynomial function. Yes, this is just a polynomial function, एक polynomial है, and since this is a polynomial function that means we can easily or we can directly substitute the value. So you substitute the value, you will get this one. Yes, and you see this question, you see this question guys, if we put here x is equal to 0, that means directly if you substitute this limit, then what will get here? If we substitute this one, if we substitute this limit, that means x is equal to a is 0 here. If we put here x is equal to 0, then what we get here? What will be this value? What will be this value guys? This is 0. Yes, ये 0 नहीं होगा क्या? 0 हो जाएगा. So 1 plus 0. So what will be this value? This will be 1. Yes. So log of 1. So now you say what is the value of log 1? The value of log 1 is 0 guys. Is it okay guys? So the value of this limit will be 0. I think is it clear now? Yes Rahul? Yeah. Okay. Now similarly you find this value, what will be the value of this one? Which option will be correct? इसको करो, इसको भी 0 आता है क्या? एक ने बोला ये होगा बोल के बोलो क्या होगा? What will be the value of this limit? देखो हम लोग करके देखते हैं. So you see here, just to verify, yes you see directly we can put. If we put here x is equal to 1 in denominator, is it 0 or non-zero? If we put here x is equal to 1, कितना होगा देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 डालने से ये 2 हो जाएगा और इसमें 1 स्क्वायर मतलब 1. तो देखो इसमें 1 दैट मीन्स क्या होगा, 1 डालने से 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 2 माइनस ऑफ 1, दैट मीन्स कितना होगा गाइस 2 होगा. सो दैट मीन्स इफ यू पुट हियर x इज इक्वल टू 1, देन ये तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या नहीं आता है गाइस, 0 नहीं आता है. That means we can easily put or we can directly substitute the value of x. So now you substitute the value of x here. Then what we get? 1 plus log of 1 minus of 1 divided by कितना होगा 1 plus 2 into 1 minus of 1 square. So you see this one, this minus 1 will be cancelled. So log of 1 रहेगा डिनोमिनेटर में और इसमें कितना आता है गाइस, देखो इसमें हम लोगों को 2 मिला था तो इसमें 2 पुट करो एंड यू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, दिस इज 0. सो 0 by 2 दैट मीन्स दिस विल बी ए बिग 0. yes, that means in this case this option also will be correct. Yes, this 0 will be the correct answer. Now you see इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जल्दी जल्दी बताओ गाइस. विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट गाइस फॉर दिस वन, फॉर दिस क्वेश्चन? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट for this one? which option will be correct? इसमें देखो which option will be correct here. देखो इसमें क्या करेगा गाइस, लिमिट x टेंस टू 0 है
ई एक्स स्क्वायर है माइनस ऑफ कॉस एक्स। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली ना गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक बात याद रखो नो गाइस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर था, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर था, नॉट ई एक्स स्क्वायर। दिस इज ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। Yes guys, e to the power x square, this is the correct, just you correct this question first. Yes, so you correct this question first. Yes, इसमें क्या होगा guys, this will be x square. Yes, now you see, just you find this value. Now if we put here x is equal to 0, if we put here x is equal to 0, you will get some value. Yes, you see, if we put here x is equal to 0, if we put here x is equal to 0, so e to the power 0 square होगा minus cos of 0 होगा। Guys, what is the value of e to the power 0 square? means e to the power 0 minus cos of 0 का वैल्यू कितना है 1। सो नाउ e टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1 है, सो 1 माइनस 1, सो फाइनली कितना मिलेगा, एक बिग जीरो मिलेगा। दैट मीन्स इसका भी आंसर कौन सा करेक्ट होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। यस, सो होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस गाइस, बोलो। Hope all of you can find or all of you can solve this type of questions. Yes, yes guys, the option 1 will be correct here. Now here some questions are there and all are your homeworks. So ये question को थोड़ा लिखो, ये जो questions है ना, इसको थोड़ा ध्यान से लिखो। You need to solve these questions. देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, हम ये सब लिखना है, खुद से लिखो। दीज आर होमवर्क। ठीक है, आई विल सेंड दिस क्वेश्चन टू व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आई विल सेंड दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी होने से लिखो। देखो इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपली क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑन लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए। यस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का दे दिया। देखो एक क्वेश्चन दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 15 माइनस 1 बाई x टू दी पावर 10 माइनस 1। यस, देखो इसमें और कुछ क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट दिस इसका वैल्यू 1 होता है, यू नीड टू शो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 and you need to find these values. Yes, these are important questions guys. Yes, you have to solve these questions. Yes, you need to solve this question. So all these questions are your homework. ठीक है, इसको solve करो, ये questions को solve करना है। These are important questions. So guys, now you say, do you have any doubt? Do you have any doubt? Okay, from my side class is over, just use, if you have any doubt then you can share. Bolo. And I request all of you to like and comment my video. Sorry, not my video, this is your video guys. So I